कॉल्ड टू बी एज बड़ा एग्जॉस्टिव इवेंट बड़ा सर्टेन इवेंट को या फिर उससे बड़ा एग्जॉस्टिव इवेंट को इट इज ऑल yes one or the same. So here when we talk about the term certain event when event is said to be a certain if the condition if the number of elements which are present in the event they are equal to number of elements which are present in the sample space. Condition which I have given over here, it is not that easy. The number of elements which are present in the event which are present in the event they are equal to the number of elements which are present in the sample space. ये देख ले if A is a certain event if A is a certain event in that case it should satisfy the condition as n of A it should be equal to n of S. N of A it should be equal to n of S such that the value of A it should be equivalent to S. Value of A it should be equivalent to S. अब यहाँ पे ये जो बड़ा मैंने कंडीशन तुम लोग को दिया ना ये सेटिस्फाई होना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना इजीली बड़ा ये सेटिस्फाई नहीं होता समझ आया सबको को। और इसी रीजन की वजह से ये जो इवेंट मैंने तुम्हारे साथ जो डिस्कस किया ना व्हिच इज कॉल्ड टू बी अ सर्टेन इवेंट और व्हिच इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ एग्जॉस्टिव इवेंट, ये इवेंट नहीं होता ऐसा नहीं है बट बड़ा इट एग्जिस्ट रेयरली नहीं होता है ऐसा मैंने नहीं बोला है, नहीं होता ऐसा मैंने नहीं बोला है, इट एग्जिस्ट एंड इट एग्जिस्ट वेरी रेयरली। और उसके लिए तुम्हें जो उसके एग्जांपल्स भी जो मिलेंगे ना वो एग्जांपल्स भी बहुत ही कम मिलेंगे। तो देखो उसके लिए एग्जांपल हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, एग्जांपल when a coin is tossed, when a coin is tossed again, so at that time only you have to say to your friend again कॉइन को टॉस करने का और कॉइन जब हवा में हो तभी तो अपने फ्रेंड को बड़ा बोल देने का if head occurs so I win and tail occurs so you lose। क्या बोला सबको, समझा बेटा सबको? you have to toss a coin and when a coin if when it is in the air at that time only you should say to your friend if head occurs I win, tail occurs you lose। So therefore it becomes an example of a certain event or exhaustive event। ये मैंने तुम लोग को बड़ा सिंपल सा ट्रिक बताया, कोई भी गेम अगर तुम लोग को बड़ा जीतना हो तो तुम लोग ऐसे जीत सकते हो।
तुम लोग बड़े ये सोच रहे होगे कि सर ये जो एग्जाम्पल है, ये सर्टेन इवेंट का एग्जाम्पल कैसे हुआ? तो देख, मैं तुम लोग को बड़ा क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग आंसर दो कि जब हम लोग बड़ा कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं? हेड्स एंड टेल्स, बराबर है? तो ये सिचुएशन में मुझे बताओ, व्हाट इज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2, बराबर? तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि लेट ए बी द इवेंट इन विच if the head occurs I win and tail occurs तो you lose, bro. तो ये दोनों के दोनों बड़ा इवेंट्स, हेड एंड टेल्स, मेरे लिए फेवरेबल हुए कि नहीं बड़ा? तो मेरे लिए बड़ा हेड भी फेवरेबल हुआ और मेरे लिए बड़ा टेल भी तो फेवरेबल हुआ कि नहीं बड़ा? तो इन दैट केस n of a will become equal to 2, and since n of a, it will be n of s, n of a, it will become equal to n of s. Therefore, this given example, it will belong to a certain event, or it will belong to a exhaustive event. समझा बेटा तुम लोग को सबको? और उसी चीज का बड़ा सेम तुम लोग को बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर चाहिए तो ये ले लो बड़ा, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड गेटिंग बड़ा हेड और टेल, जो मैंने बताया था बड़ा उसी का वर्जन है. इज एन एग्जांपल ऑफ certain event, rolling of a dice नहीं, make a connection, rolling of a die and getting a number less than 7, तो मुझे ये बताओ बड़ा फटाफट कि again when a die is rolled, what is the sample space that we obtain? Correct. So what will be n of s will be equal to 6. Correct. Let a be the event. Let a be the event of getting a number less than 7. तो उसमें हम लोग को एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6. Next, therefore n of a will be equal to, and since n of a is equal to n of s, therefore it is an example of certain event, or it is an example of complement of an event. Next, after completing third type of event, let me study next, which is called to be as complement of the event. Complement of the event. So when we are talking about the term complement,
complement of the event bro. So beta meaning of the word bro, complement it means beta it is the opposite bro. Complement bro. That means beta it is the opposite of the event bro. So basically beta what is complement of an event is so beta complement of an event bro, is a set complement bro, of an event bro, is a set which contains contains all those elements which contains all those elements which are not present in the event which are not present in the event but they are present in a sample space but they are present in the sample space and the important thing is when we talk about its notation so on one side there is an event and on other पढ़ाई side के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट and तैयारी का on साथी। other side there is the complement of the event complement of the event क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को on one side there is a event and on other side there is the complement of the event so in that case you can see that if A is the event if A is the event then the complement of the event it has been denoted by using A dash or it has been represented by using A bar or it has been represented by using A raised to C but it is like this ऐसा A देखो यहाँ पे it is A raised to C which is read as A complement which is read as A complement out of this we are going to prefer the first one we are going to prefer the first one which is called to be as A dash अब तुम लोग मुझे बताओ कि B is the event B is the event then the complement of the event B
it will be represented by using B dash, and if the C is the event, so in that case, the complement of the event, it will be represented by using C dash. And now when we talk about the examples of the complement of an event, when a die is rolled, we get the sample space to be as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let A be the event of getting odd numbers. अपने favorable outcomes क्या हो जाएंगे? If A is the event of getting the odd numbers, तो अपने favorable outcomes हो जाएंगे 1, 3, 5. But this time we are not interested in A. We are interested in A dash. मुझे ये बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू A dash मुझे ऐसे एलिमेंट्स कंसीडर करने होंगे जो A में नहीं है बट वो सैंपल स्पेस के अंदर है। मुझे ऐसे एलिमेंट्स बताओ कौन से हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन A। करेक्ट, 2, 4, 6 but 2, 4, 6 it is a set of which numbers? Even number। तो A जो था it was a set of odd numbers A जो था it was the set of odd numbers। तो A dash जो हमें मिला वो हमें मिला था सेट ऑफ इवन नंबर्स। मैंने पहले ही बोला था तुम लोग को कि कॉम्प्लीमेंट मींस इट इज द अपोजिट। और देखिए यहाँ पे हुआ ना अपोजिट ऑड का अपोजिट इवन। एंड नाउ दिस रिमार्क it is considered to be as very important। मार्क करो उसे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट में करेक्शन है, इट इज A complement the whole complement। Answer is equal to A। Make it A dash the whole dash। A dash the whole dash। Second is it is with respect to union A union A dash। अब यहाँ पे यूनियन बोला है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन। We have to combine all the elements of A and A dash।
दिशा सर ने तुम लोग को सिखाया होगा ना बेटा, यूनियन ऑफ टू सेट्स. So if I try to combine but all the elements of A and A dash, तो चेक करो बड़ा, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा. कंबाइन करो बड़ा, ए के एलिमेंट्स 1 3 5, बी के एलिमेंट्स बड़ा 2 4 6. अब सबको बड़ा अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6. ये जो बड़ा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट जो मिले तुम लोग को, व्हाट दे बिलोंग्स टू. यस करेक्ट बड़ा, दे बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस. एंड फिर उसके बाद बड़ा थर्ड पॉइंट देखो, ए इंटरसेक्शन ए डैश. Intersection means you have to find the common element between A and A dash. मुझे बताओ बड़ा, between A and A dash बताओ बड़ा, what are the common elements. Is there any common element बड़ा between A and A dash? No. तो इसका मतलब yes correct बड़ा. It is an empty set बड़ा, or null set बड़ा. चलो रिवाइज दिस, गो थ्रू कर लो बेटा सब ये. For 2 minutes बड़ा, everyone revise that. Then we'll proceed beta with the next, with the independent events.
चलो बड़ा, any doubts? So let me proceed with the next. At number 5, which has been called to be as independent event theorem. अब कहीं पे बड़ा नोट कर लो ये independent event theorem. It occurs between the two event theorem. Independent event theorem. It occurs between